Aquaculture Authority of India approved the supply of broodstock of Monodon by the following two empaneled suppliers dated 17/2/2020 to Mona Technologies LLC USA and Aquaculture Dila Mahajamba Madagascar. This empanelment is for the continued supply of SPF broodstock of Monodon to demanding Indian shrimp hatcheries. In turn, they will produce the seed and supply to the Indian aqua farmers. In view of the demand of Monodon post-larva, that is seed, by our shrimp farmers, the hatchery operators approached these SPF broodstock suppliers for their specific quotation and terms and conditions for the supply of SPF broodstocks. There has been no response from the concerned suppliers. They were empaneled by the ministry with their expression of interest and the personal presentation as indicated in the order, sir. Both these firms are supplying the broodstock to only one hatchery under each of them, which essentially leads to monopoly of the sale of the post-larva. That means instead of 50 paise per PPL, this monopoly companies supplying at 1 rupee 50 paise to the aqua farmers in India, which we believe that the authority or ministry will not permit. The monopoly is being established by the firm which were permitted by the Government of India for the establishment of BMC, that is the Broodstock Multiplication Center of SPF Monodon, by procuring present post-larva from the empaneled overseas SPF producer. That is the reason they prevent the direct supply of SPF broodstock by the overseas SPF producer empaneled by the government to Indian hatcheries. Since there is no response for our supply request to both the empaneled overseas firms, we would request your kind self to do the needful so that they will confirm the supply of SPF broodstock to all the Indian registered hatcheries. An early action in this regard will help the shrimp production levels in the country. For your kind information, sir, who is sitting next to me, Honorable former Fisheries Minister, Mr. Mopidevi Venkatraman, also personally wrote to the concerned authorities at central and state to take immediate action. So far, nothing happened. Kindly see that, and all of our YSRCP Honorable Rajya Sabha MPs also associated on this question, sir. Thank you, sir. Thank you. Kindly send all your names here who are associating. Mani Sri Ramji Lal Sumanji demand to abolish tax on manufacturing of shoes as well as simplification of rules for shoes industry. उपसभापति जी, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। आगरा में लगभग 300 वर्ष पुराना ये जूता उद्योग है, मुगलों के ज़माने से, जो एक प्रकार से कुटीर उद्योग है। अपने घर पर ही रह कर के बच्चे, बुजुर्ग लोग, महिला और पुरुष घर पर ही काम करते हैं। और सभापति महोदय, गरीबी का आलम यह है कि जिन बच्चों को स्कूल जाना चाहिए था वो जूता बनाने के काम में लगे रहते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि उपाध्यक्ष उपसभापति महोदय कि अगर वो बच्चे काम नहीं करेंगे तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। 1974 में राज्य सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जूता उद्योग को टैक्स फ्री कर दिया था। जूता कारीगरों की हालत ठीक करने के उद्देश्य से एक जूता मंडी भी बनी जिसका नाम शू प्लाजा था। राज्य सरकार ने जूता प्रदर्शनी एवं प्रशिक्षण केंद्र बनाया, जिसके मुताबिक राज्य सरकार ने मुफ्त में जमीन दी और ये कहा गया कि आगरा विकास प्राधिकरण दुकानें बनाएगा और सस्ती दरों पर इन कारीगरों को दुकानें दी जाएंगी। कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने का ये प्रयास था, लेकिन विकास प्राधिकरण ने जो दुकानें बनाई वो इतनी महंगी थी कि जूता कारीगर इन दुकानों को खरीद ही नहीं सकते थे, उनकी क्षमता से बाहर थी। कारीगर चाहते थे कि लागत मूल्य पर दुकानें आवंटित की जाएं और नो प्रॉफिट और नो लॉस पर उन्हें कारीगरों को ये दुकानें मिलें। भारत सरकार ने जूता कारीगरों के कल्याण हेतु भारत लेदर कॉरपोरेशन बनाया था, जो 2002 में बंद हो गया। जूता कुटीर पर 12% GST है। सभापति महोदय, भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग की सबसे बड़ी इकाई भारतीय चर्मोद्योग संघ है, जिसके राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा
जूता आपूर्ति के आर्डर दिए जाते थे सरकारी कर्मचारियों के लिए। 2008 से सरकार ने जूता खरीदना भी बंद कर दिया है। सरकारी संरक्षण न मिलने के कारण तमाम छोटी मोटी इकाइयाँ बंद हो गई हैं। मेरी आपके मार्फत सरकार से मांग है कि इंडस्ट्रियल इलाके में कारीगरों को जगह दी जाए, नियमों का सरलीकरण किया जाए, सस्ती ब्याज दर पर कारीगरों को ऋण दिया जाए, कारीगरों को बाजार उपलब्ध कराया जाए और कोई ऐसा चिन्ह या कार्ड दिया जाए जिससे कारीगर अपना उत्पाद बेच सकें। सभापति महोदय, मैं विनम्रता से आपसे कहना चाहूँगा, ये कितना विडंबना है कि जो जूता बनाता है उसे लाभ नहीं मिलता, जो मीडिएटर है, बिचौलिया है, जिसका जूता बनाने से कोई संबंध नहीं है, वो जूता कारीगरों से सस्ती दर पर जूता खरीदता है। वो अच्छा डब्बा लगाया, अपना ट्रेडमार्क लगाया और वही जूता सभापति महोदय जो 250 रुपये में बेचा कारीगर ने, मुंबई और कलकत्ते के बाजार में 3 और 4 हजार रुपये में बिकता है। सभापति महोदय, मैं आपसे मार्फत सरकार से मांग करूंगा कि सरकार इस कुटीर उद्योग को संरक्षण दे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 121, श्री सामिक भट्टाचार्य। Honorable Minister. Supplementary one, Shri Samik Bhattacharya. Sir, my question regarding PIB, Press Information Bureau. The PIB fact-checking is doing a great job since 2019. However, fake news by the fact-checking only in Hindi and English. Given that fake news against the central government is the highest in West Bengal, is the ministry planning to establish a dedicated fact-checking unit under PIB Kolkata to specifically address this issue in the state? Honorable Minister. Respected Chairman Sir, the Minister question is very specific. Before that, I want to take 2 minutes of this House, Mr. Chairman Sir. Chairman Sir, you are also expressed about the fake news. In a function, you mentioned in that unregulated information and fake news could create a disaster of unimaginable proportions. You mentioned that. Sir, the fake news is a very social event, sir, evil. So we have to control this fake news and misleading information, sir. As our honorable member mentioned that in West Bengal, the fake news and misleading information are more. Yes, sir, right, sir. Last week also we know that the West Bengal Chief Minister came here in Delhi to attend a Niti Aayog meeting. In that meeting, she mentioned that her switch was off. But in that, we had a issue that this statement is misleading. So like that in West Bengal, some one member... Honorable Minister, we will delete the name of the Honorable Chief Minister. Okay, sir. Our Chief Minister said so. Chief Minister Please go told. ahead. I didn't told the names. So, Chief Minister told. And that message is misleading. And the members is concerned of the fact check unit to establish in West Bengal. Sir, now we don't have a plan to establish fact check units in a regional level. The fact check unit is in Delhi. We have a very good system here, sir. In Delhi itself, we are doing the fact check units. Sir, we almost 2019, we established this fact check unit. Almost 47,562 fact checks actionable queries we took, sir. Out of that, 4,800 fact check was fact checked and 9,922 messages are we busted as an fake news.